A very good evening to all the FMG aspirants who are listening to me right now. Some of you are joining live here. Some of you will be joining, watching this video in a recorded format. I'm Dr. Sandeep Sharma. I'm your pediatric faculty. I am pediatric faculty at DocTutorials for FMG, NEET PG, and INICET. Many of your classes, offline classes, I have taken. Some of us have connected through virtual areas. So I'm here going to take up the recall of FMG exam, and I will be concerning myself with the questions related to the pediatrics part. Uh, this exam was a bit, I would say, moderate to slightly difficult level compared to the previous exams. And the reason I say is that the paper was more clinical. There was a lot of ophthalmology, lot of obs gynae, but one consistent thing was pediatrics was there. So last January exam, if you had seen, there were about 23 to 24 questions. This time there were roughly about 18 to 20 questions, I would say, from core pediatrics, and then there are the overlap topics. Before I start with this session, I want you to know about the disclaimer that these are memory-based recalls and any resemblance to actual question is incidental. And of course, if the language changes, if the option changes, the answer will also change. So what students should focus on is the topic and what examiner is trying to say. And I have used standard references like OPGI 10th edition and Nelson 22nd edition to give you the correct answers. Another disclaimer which is not written here. As soon as this video goes up, and even in the comment box, some students will be saying, this question was not there. Sir, that question, this option was not mentioned. You're most welcome to share that. But at the same time, I have not given the exam. You have given the exam. So if there is a change in the question, you see what I am discussing, what I'm telling you, and based upon that, what should be the correct answer. You understand? And this file which I'm discussing here, I have circulated this file through at least 5 or 6 different unrelated students, and they have given a go ahead. Ki, sir, this file looks very similar. Although they had some doubts, very similar. Wherever doubts are there, I will be telling you. And so I have tried my best to give you unfiltered way, question way, the way it has been asked, similar to what was there in the exam. I'll not take much time. I will start with the overview of pediatrics in FMG. This July FMG exam, there were about 20 pediatric MCQs, roughly. 16 to 17 is core pediatrics, means if you just do pediatrics alone, it is sufficient. You don't need to read any other subject to solve those 16 questions. Others were overlapping. Overlapping means you need to have information, you need to have idea, or you need to have read other systems, other subjects also. These are the integrated ones. 90% of all pediatric questions were solvable. So 20 questions, pediatric questions, when I'll show you, you will understand why am I saying so. 90% of them were solvable and previous year topics, but lengthy clinical case temper used. So it was a more of a time consuming paper this time. Some PYQs have been taken from NEET, PG, and INI-CET. This is something which was rare in the older times. Now, NEET, PG, and INI PYQs become important henceforth for all your future FMG exam. Overall, pediatrics was a solvable subject and it was a scoring area in FMG exam. And for future exams, you need to read in more details. Let me put it very clear. I also take classes as TND. I also take classes as rapid revision, first course, crash course, half a day classes also I taken. With all due respect, if you are targeting December exam, please don't fall prey to shortcuts. Don't hit reverse sweeps in the first over of a test match. You understand what I'm saying? The cricketing analogy. The reason is exams are conceptual. You need to build up. Questions are integrated. And you need to practice the topic not only from FMG PYQs, but also from NEET PG and INICET MYQs, right? So let us continue with the discussion. Let us start with question number 1. There's an easy one. Uh, a 5-year-old child came with dyspnea and repeated cyanotic episodes. He had clubbing of the digits and chest x-ray is as shown. What is the likely diagnosis? Two versions of this question have been shared. I will be sharing all the recalls I have got from multiple sources. I will be telling you what was the variations I got, and you are most welcome to make changes accordingly. So this is a x-ray of a child with cyanosis, and the child is having, as you can see, typical boot-shaped heart. This is what you call as core and sabot, also called as boot-shaped heart. So core and sabot with pulmonary oligemia in a cyanotic child,
What is the likely diagnosis? You are looking at tetralogy of Fallot. I'm 100% sure that most of you would have got this question correct. Some students were of the opinion कि sir TGA में दिक्कत आता है, but TGA was not in the options, and even if it was there, this would have been a easy peasy. In fact, this image, very similar image was shown, and I have already discussed in one of my videos on DocTutorials that this is the chest X-ray and TOF. Two features examiner OSCU and FMG, one pulmonary oligemia, that is decreased pulmonary blood flow, and boot-shaped heart, also called as CORE and SABO. I will be showing you snippets in between. The purpose of showing this snippet is not to claim that everything I have discussed. The purpose is to tell you that many students are right now saying on social media, कि sir PYTs were less, PYQs were less, PYTs were there, and significant number of PYTs were there. It is just that they went into more details, options were more close, and the case scenario had been stretched a bit. So you need to adapt accordingly. Okay. Moving to question number 2. So question number 1 is TOF. I am 100% sure all of you would have got it right. Question number 2. A child presented to clinic with fever, sore throat, and vesicles on hands. Some people said painful vesicle the. Doesn't matter, painful, painless vesicle, both can occur in this child. The lesions are present on hands, feet, and mouth as shown in the image. Similar cases have been reported in daycare and among classmates. There has been an outbreak. This is hand, foot, mouth disease. Hand, foot, mouth disease is the answer. One of the options was parvovirus B19. Parvovirus B19 produces the slap cheek appearance. Herpes simplex virus does not produce palm and sole lesion. Remember that. Herpes simplex can produce painful lesion, but they will be present on the lips and on the genital mucosa. And Epstein-Barr virus produces infectious mononucleosis. It does not present like that. So your answer was Coxsackie virus. The most common cause is Coxsackie A16. Second most common cause is enterovirus A71. This is a previous year topic. This is a previous year question, and answer to this question is B. So both the PYQ, both the questions I have shown you, they are indirect repeats. So they are not unsolvable questions. They are indirect repeats. Let's go to question number 3. The difficulty level will also keep on changing. Where needed, I will go slow also. So question number 3, a 4-month-old child is brought to the emergency department with a respiratory rate of 56 per minute. Another student said, कि sir age 4 month tha, but it was 66 per minute. Doesn't matter. If it is above 50 in a 2 to 12 month child, that is fast breathing. He also had chest indrawing, nasal flaring. Nasal flaring is not used to define pneumonia in a child and is not feeding well since more than 12 hours. Not feeding well, inability to feed or drink is a danger sign. So this is a child who's having a danger sign. So there is fast breathing, chest indrawing, danger sign. What is the likely diagnosis? Any child having danger sign along with features of pneumonia is called as severe pneumonia, and that is your correct answer. The answer to this question is D, that is severe pneumonia. Whenever you have a question like this, break it down. What is the information given? And it will be very easy for you to answer the question. So this is the summary of what I teach in my classes, and I have discussed in my revision classes also, in my T&Ds also. So this was also an indirect repeat question. Some people overthought, at least 3 or 4 students I personally know quite well. They were like, sir, galti ho gaya, overthink kar liya. Overthink, it's okay. A few silly mistakes everyone makes. So any child for future exams and those who are watching this discussion on the YouTube channel, understand, any child less than 5 years presenting with fever and cough. First, you define fast breathing. What is the cutoff we take? This table. This table will be very important. For those who are very happy with their exam, this question can be asked in NEET PG also. Pneumonia diagnosis is a sure short topic for FMG. It is also a sure short topic for NEET PG and INICT. Rules will remain the same, only negative marking will come there. So 8 to less than 2 months, fast breathing is 60 per minute or more. 2 to 12 month, 50 per minute or more. 1 to 5 year, 40 per minute or more. So first you see fast breathing is there or not. Then you see chest indrawing or chest retraction, whether ye hai ki nahi. Third, we check for severe malnutrition, abnormally sleepy or difficult to awake, called as lethargy. Inability to feed or drink, this was what was mentioned, and convulsions. These are considered the general danger signs. And then you make the diagnosis. How do you make the diagnosis? No fast breathing, no chest indrawing, no danger sign. Child is having no pneumonia. These children require no antibiotics. Only supportive therapy is good enough. Fast breathing or chest indrawing, but no danger sign is pneumonia. Here you give oral antibiotics for 5 days. Amoxicillin is the one which is given in these patients.
It's okay, Vasif. Even if you got it wrong, still there are enough number of questions, enough, that range you have. Any general danger sign or SpO2 less than 90% or stridor at rest, the answer is severe pneumonia. Severe pneumonia is also called as very severe disease. Very severe disease. Here you will use IV antibiotics. You will use ampicillin along with gentamicin. If you are sitting in a primary health center, give first dose of IV antibiotic and refer to higher center and refer the child on oxygen. So this is a summary and this is something we have discussed before. Come back to the question. You will see the child has fast breathing. He has chest indrawing and there is a danger sign present. So the answer to this question is severe pneumonia. Let's go further. Question number 4. A 3-month-old child has been clinically diagnosed as pneumonia. Which of the following is the likely causative agent for pneumonia at this age? So, two questions were asked from pneumonia. What is the answer to this question? This is something I have discussed in my doctorals classes, in my doctoral video lectures, as well as in all the offline classes I have taken in Delhi, in Jaipur, and other places, including online. This is from my existing notes, the workbook that I have that I share with everyone. So causes of pneumonia, most age less than 2 months, same causes as for neonatal sepsis. So you have group B Streptococcus, Klebsiella, E. coli. Age 2 months to 5 year, viral causes are most common. Which is the most common viral cause? RSV. I have taught this in the class, followed by bacterial causes like pneumococcus. And age 5 to 15 year is a NEET PG question. Mycoplasma followed by pneumococcus followed by chlamydophila. Causes of pneumonia age-wise have never been asked in FMG so far, but they have been asked multiple times in NEET PG exam. So this was a previous year subtopic they have picked up from NEET PG. You understand the evolution which is happening. So for future exams, you need to up the game. So question number 4, the answer is A, that is respiratory syncytial virus. Vasif Arshad is asking, but sir, do we use the term as severe pneumonia? Yes, Vasif, we use the term severe pneumonia. IMNCI guidelines, 2021, they were updated. 2023, sub update came. Both of them use the word severe pneumonia. Okay. Moving further. Question number 5. A 6-month-old infant presented with sudden brief spasms of neck, trunk and limbs with head falling forward and episodes occurring in clusters. So ये जो spasm होता है इसे हम कहते हैं infantile spasm. Infantile spasm, when the head falls forward, it is also called as salam attack or salam spell. EEG showed the presence of hypsarrhythmia. One student said hypsarrhythmia का photo दिया था, but at least 6 to 7 students said, sir कोई photo नहीं दिया था, it was mentioned only hypsarrhythmia. So infantile spasm, onset in infancy, hypsarrhythmia happening, the likely diagnosis, तो पहला diagnosis बनाएंगे, West syndrome is the diagnosis. And in West syndrome, what is the drug of choice? High dose ACTH. Dear friends, this is a repeat question. This is also a NEET PG repeat question. तो ये FMG में भी आ चुका है one liner के form में. What they did was they converted it into a case scenario. So every question if you see, they are raising the game. They are just making it 0.5% tough. And people who take a lot of time in reading the question, they had a problem of time management in this paper. So evolve, adapt, and I do hope that most of the adaptation you have to do for NEET PG, but whatever has happened has happened. Let's keep fingers crossed. And all of these questions, I'm quite sure most of you would have got right. So answer is high dose ACTH. That is your answer. Okay. Some students said कि sir head गिर रहा था तो गिरने वाली चीज तो जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी होती है. No, उसमें हाथ से चीज गिरता है, यहां पर सिर गिर रहा है आगे. So that is infantile spasm and juvenile myoclonic epilepsy does not occur in infancy. Its age of onset is 10 to 16 years, right? That if that was a question, it was a separate question. I don't know whether it was a question or not, but answer to this question is high dose ECTH. High dose is important. क्योंकि जब नीट पीजी में क्वेश्चन आया, listen to me very carefully. There were two options people got stuck. एक high dose ECTH था, एक low dose ECTH था. Normally what happens in any epilepsy, चाहे child, adult, newborn, any epilepsy, we give a loading dose. Then we start with this lowest possible dose and gradually increase the dose, right? Normally ये करते हैं कि पहले दिया, seizure control नहीं हुआ, then you increase. West syndrome के अंदर, if the seizures continue for a long time, the child develops severe neuroregression, developmental delay.
And so what we do is we start with maximum dose, and once control comes, then we taper off and bring the child to minimum dose. So what is to be started? It is not low dose ACTH, it is high dose ACTH, which is to be mentioned. Rohit, if it was only ACTH, great. Two students said, including one on the Telegram group that you are also part of, कि sir high dose ACTH था. But from NEET PG perspective, याद कर लो, high dose ACTH, low dose ACTH, दोनों में से क्या आंसर होगा? हमेशा high dose ACTH is your answer. ये एक exception है, concept है. We will discuss when we meet again for NEET PG exam. है ना? We'll think positive. Question number 6. A neonate is to be delivered normal vaginal delivery at periphery. He was delivered. Which of the following is not to be done? Not to be done immediately after delivery. क्या नहीं करना है? देखो, this question is a indirect repeat. This is a indirect repeat of NEET PG 2024 MCQ. और इसको मैंने नीट पीजी रिकॉल में भी डिस्कस किया है, एंड आई हैव डिस्कस्ड इन माय क्विक रिवीजन प्रोग्राम फॉर एफएमजी आल्सो, क्यूआरबी प्रोग्राम, द लेटेस्ट वन. सो क्या नहीं करेंगे? देखो, कॉमन सेंस लगाना है. अब आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स इन माय इंस्टाग्राम सेशंस आल्सो कि कॉमन सेंस. देखो, क्या बच्चा पैदा हुआ, वुड यू प्लेस द बेबी ऑन मदर्स चेस्ट? ऑब्वियसली, और कहां जाएगा? वुड यू क्लीन द आईज? इफ देयर इज ब्लड और म्यूकस अटैच्ड, यू विल क्लीन इट विद अ स्वैब. शुड यू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग? इट हैज टू बी स्टार्टेड. कभी सुना है कि किसी न्यूबॉर्न को पैदा होते नहला दिया? न्यूबॉर्न इज केप्ट अंडर थर्मल प्रोटेक्शन. इट इज केप्ट अंडर रेडिएंट वार्मर. Bathing is not to be done in the first 24 hours under any circumstance. You can clean the baby using a wet, sterile swab or a sheet, but you can't bathe the baby. Bathing should be postponed for at least 24 hours, and ideally it should be done somewhere when the cord starts to get dried up. It is somewhere around 5 to 7 days, but इतना लंबा नहीं खींचते हैं. Practically we do some sort of bathing not involving the head. The lower part of the body can be cleaned starting from second day of life, right? So immediately bathing the baby will not be the answer. Hypothermia हो जाएगा, that is the answer. So इस टॉपिक को एक बार जल्दी से रिव्यू कर लो. टू सेव टाइम आई एम जस्ट शोइंग द क्यूआरपी सेक्शन वेयर आई हैव डिस्कस्ड दिस थिंग. एंड देखो, इसके ऊपर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड नीट पीजी 24. कोई भी बच्चा पैदा होता है, इमीडिएटली क्या करना है? मेंटेन एसेप्सिस 5 C's. देन डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग at least by 30 seconds so that anemia does not develop. You clear meconium and blood secretions from the body using a swab. Do not wipe vernix caseosa. एक चीजी मटेरियल होता है, उसको साफ नहीं करना, वो ड्राई ऑफ होके खुद गिर जाता है. Do not bathe immediately. इस पॉइंट के ऊपर एमसीक्यू बना दिया इन्होंने. क्लीन आइज यूजिंग स्टेराइल सलाइन गॉज फ्रॉम मीडियल टू लैटरल. ये भी एमसीक्यू आता है कि कैसे साफ करना है. हमेशा you go from medial to lateral. देखो, क्रीम लगाते हैं फेस पे तो कैसे लगाते हैं? Like this. So similarly, you take individual swabs and clean from medial to lateral. Then keep the umbilical cord dry and give 1 dose of vitamin K intramuscular at birth. This is something again which you all already know. Okay, so answer to this question is C, immediately bathing the baby. Question number 7. Now, डॉक्टर देबा के 9 month वाले टॉपिक पे हम आ रहे हैं. माइलस्टोन का क्वेश्चन आई हैव केप्ट इन द एंड बिकॉज दैट इज आल्सो अ कंट्रोवर्शियल एंड टफ वन. So 8-year-old child has bedwetting at night at least 2 times per week, but no bedwetting during daytime. So this is a child who has nocturnal enuresis. So what is the diagnosis? Nocturnal enuresis. इसको कहते हैं bedwetting. Nocturnal enuresis कभी FMG में नहीं आता normally, but it has been asked in INI-CET, and because it is repeatedly being asked in INI-CET, in my quick revision program, which was launched this year, and some of you have actually messaged me, those, if you are watching this video, you know I'm talking about you. So आपने मुझे बोला कि सर आपने ये टॉपिक को डिस्कस किया था और बोला था छोड़ के मत जाना. It did come in the exam. Again, we do not claim to be astrologer. Nobody is, but there is always a pattern. There are topics which are trending in NEET PG or INI. What this exam has shown is for FMG, you not only have to be thorough with them, but also the recent 3 or 4 year papers of NEET PG and INI CET. अब ये करना पड़ेगा, not only in my subject, but if you have given the exam and you are seeing the recalls of other subjects, you would see कि एक-एक MCQ matter करता है. So this is another topic which is a indirect repeat. So I will just mention this is indirect INI-CET 2020 question, repeat question. तो nocturnal enuresis है, no UTI और no neurological problem. जब UTI ना हो तो उसे कहते हैं primary nocturnal enuresis. Okay.
What is the management? इन सभी बच्चों के अंदर behavior therapy and a bed alarm is always the best management. Now, some people said behavior alone was mentioned. Some said alarm was also word mentioned. I don't know what was there. The answer will never be drugs. It will always be behavioral and alarm therapy. Wasif Arshad, बिहेवियरल टिल 5 ईयर वाला कोई फंडा नहीं है. वेयर आर यू रीडिंग ऑल दिस? 5 ईयर में हम ट्रीट ही नहीं करते हैं. यू अंडरस्टैंड? एनी एज नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, द थेरेपी, फर्स्ट लाइन थेरेपी इज ऑलवेज बिहेवियरल थेरेपी. Okay, let us have a quick review of the topic. This is taken from QRP. मैंने अपना टाइम सेव करने के लिए स्नैपशॉट ले लिया. Look at this. Nocturnal enuresis में क्या याद रखना है? DSM-5 definition. Normal and complete bladder emptying at night at least 2 times per month. यहाँ तो 2 times in a week हो गया है. For at least 3 months in a child aged 5 years or above. 5 साल से कम में बेड वेटिंग को डिफाइन ही नहीं करते. So there is no such thing as nocturnal enuresis. देन एन्यूरिसिस दो तरह का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी इज ड्यू टू ब्लैडर इमेच्योरिटी, ये सबसे कॉमन है. सेकेंडरी होता है ड्यू टू यूटीआई. इसमें यूटीआई नहीं था तो क्या देख रहे हैं? प्राइमरी एन्यूरिसिस. सेकेंडरी का क्या ट्रीट होता है? ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज. इफ यूटीआई इज कॉजिंग, यू ट्रीट यूटीआई, एन्यूरिसिस विल गो अवे. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी एन्यूरिसिस? स्टार्ट थेरेपी स्टार्टिंग फ्रॉम 6 years of age. दिस इज नीट पीजीएमसीक्यू. कौन सी एज से स्टार्ट करते हैं? 6 साल ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लाइन थेरेपी इन एनी एज क्या है? नॉन फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इन द इवनिंग एंड नो फ्लूइड्स आफ्टर 8 PM शुड बी गिवन टू द चाइल्ड. साथ में देंगे बेड अलार्म, बेल एंड पैड कंडीशनिंग सिस्टम. जब भी बच्चा वेट होगा, द अलार्म विल गो ऑफ, इट विल वेकन अप द चाइल्ड. सो चाइल्ड विल स्टॉप involuntarily, he will stop passing urine at night. And motivational therapy can also be added to it. So this is considered to be the first line therapy in all children. Second line therapy is drugs. Even in drugs, the first line drug which is to be used is oral desmopressin. Nasal form is no longer used. If this is not working, then we go towards anticholinergic agents. And imipramine is no longer used. It is contraindicated. Now, imipramine is contraindicated in these patients. This is very, very important. Very, very important topic. So this is a brief review. तो जो लोग दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं और those who will be passing the exam this time but preparing for FMG, इस फोटो को, इस वीडियो को सेव कर लो, इसका स्नैपशॉट रख लो. ये काफी है. सर ट्रस्ट मी, ये काफी है. इसके बियॉन्ड नहीं आता है. आईएनआई में भी नहीं आता है, नीट पीजी में भी नहीं आता है. तो ये स्लाइड को सेव कर लो. आपका एक टॉपिक का रिव्यू तैयार हो गया. राइट, मूविंग फर्दर. क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. A child presented with recurrent pneumonia, sinusitis, and diarrhea with fatty bulky stool. This is nothing but steatorrhea. So steatorrhea हो रहा है, sinusitis हो रहा है, pneumonias हो रहे हैं. So what is the likely diagnosis? If there is recurrent pneumonia along with malabsorption, the patient is likely to have cystic fibrosis. So cystic fibrosis में which of the following tests shall be helpful in making the diagnosis? Sweat chloride test is your answer. लोगों ने बोला इम्यूनो ऐसे हो सकता है. इम्यूनो ऐसे नहीं, CFTR जीन म्यूटेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट, और देखो इंडिया इज अ रिसोर्स लिमिटेड कंट्री. यहाँ म्यूटेशन टेस्टिंग इतना इजी नहीं होता है. व्हेन यू विल बी डूइंग इंटर्नशिप यू वुड रियलाइज. कोई पूछेगा क्या करें, आप बोलोगे म्यूटेशन एनालिसिस, लोग हंसेंगे. लोग बोलेंगे तुम्हें रियलिटी पता है. Sad part of our system is its CFTR gene mutation testing is not easily available and it's costly. तो हम diagnosis किसके basis पे करते हैं? Of course, we confirm the diagnosis later, but clinical picture along with positive sweat chloride test, 2 बार या 2 बार से ज्यादा, that is diagnostic of cystic fibrosis, even if CFTR gene mutation is not available. तो cystic fibrosis को डिटेल में पढ़ना है. इसका diagnostic criteria नीट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अब पढ़ना पड़ेगा फॉर FMG एग्जाम. मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 9. आगे चलते हैं. A neonate born to a diabetic mother is being monitored. He had a blood glucose of 35 milligram per deciliter at 24 hours of life, but is asymptomatic. What is the next step in management? ऐसी ऑप्शंस दिए थे. अगर कोई एक ऑप्शन ऊपर नीचे हो तो प्लीज एक्सक्यूज मी, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बड़ा प्रिसाइजली सबने याद किया है. तो ये क्या है केस? दिस इज अ केस ऑफ नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया. तो इसको समझने के लिए, टू सॉल्व सिमिलर क्वेश्चंस इन द फ्यूचर, लेट्स मेक अ सिंपल फ्लो चार्ट. मेक इट विद मी, इट विल टेक जस्ट 2 minutes एंड यू विल ऑलवेज रिमेंबर फॉर लाइफ बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स ऑल्सो. और जो दिसंबर में एग्जाम देना है, अब तो ये PYQ है. सो एनी न्यू बॉर्न
sorry. Any newborn, I'll write like this, any neonate with blood glucose less than 40 milligram per deciliter, we say it is neonatal hypoglycemia. It is neonatal hypoglycemia. अब क्या करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इन्वेस्टिगेट तो करेंगे, सेंड इन्वेस्टिगेशन, राइट? अब देखोगे ब्लड ग्लूकोज कितना है. टू पॉसिबिलिटी. सबसे पहले वेदर इट इज एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट और इट इज सिम्प्टोमेटिक पेशेंट. इफ इट इज एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, आप मॉनिटर कर रहे थे एंड इंसिडेंटली इट वाज फाउंड, you would see how much is the blood glucose, 20 to 40 and less than 20, right? Asymptomatic is generally a stable baby. Stable का मतलब asymptomatic होता है, right? Symptomatic का मतलब, for example, child is having seizures, jitteriness, ऐसे word use करे तो इसका मतलब symptomatic है, और unstable baby होता है. If it is asymptomatic and blood glucose is between 20 to 40, तो हम क्या देंगे? Give a oral feed. बिकॉज इट इज अ न्यूबॉर्न, तो कौन सा फीड करवाना चाहोगे? ब्रेस्ट फीड. एंड रीचेक द ब्लड ग्लूकोज इन 20 to 30 minutes. If still hypoglycemic, now you will start the child on IV dextrose infusion. Dextrose glucose are synonymously used. तो IV glucose लिखें तो वो भी सही है. IV dextrose infusion. What is the meaning of infusion? Any drug which is given IV can be given in two forms. You can give a bolus, rapid push, or you can start a infusion rate. So here we will start a IV infusion rate, IV dextrose infusion. That will be started. If it is less than 20, you will directly start with IV dextrose infusion. But if it is symptomatic, कोई भी symptom आ गया, seizure आ गए, you have to rapidly increase the blood glucose level. So you will give IV dextrose bolus. और ये डोज याद करना पड़ेगा, 10% dextrose, 2 ml per kg, 2 ml per kg. And then if needed, you will start the child on IV dextrose infusion, because बार-बार seizures हो सकते हैं. So to maintain blood glucose till the cause is treated, you will be starting like this. You can take a screenshot, write it somewhere, again save this video or at least save this screenshot from YouTube, right? Not from my app. So you can save it there and utilize it. This is very important for FMG now and NEET PG. It is again a NEET PG style question. Neonatal hypoglycemia का treatment पहली बार पूछा गया है. So it was a tough question from FMG exam perspective. Okay, moving further. Question number 9. तो आंसर क्या होगा, आप देख के बताओ. एसिम्प्टोमेटिक है, ब्लड ग्लूकोज 20 to 40 है, तो क्या देना चाहोगे? What is your answer? Give me the answer. What is the answer? I'm waiting for your answer. The answer to this question is, what is the answer? A, give breastfeed under supervision, recheck blood glucose after 1 hour. अब ये वाला जो ऑप्शन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया. कुछ लोगों ने कहा कि सर 20 मिनट्स था, कुछ ने कहा 30 मिनट्स था, कुछ ने कहा 1 आवर था, लेकिन देना क्या है? ओरल फीड देना है. एंड सो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. बाकी के ऑप्शन देख लो. ऑब्जर्व एंड रीचेक ब्लड ग्लूकोज अगेन. भाई हाइपोग्लाइसीमिया है, क्या करोगे ऑब्जर्वेशन करके? अपने आप थोड़ी ठीक होगा. ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज बोलस कब देते हैं? गिविंग बोलस in asymptomatic hypoglycemia causes worsening of neurological status. Yes, there are reasons for that. उससे काउंटर एक्टिव हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया को फर्दर वर्सन करते हैं. सो अनलेस सिम्टम्स आर देयर, यू विल नेवर गिव बोलस, राइट? ओवर ट्रीटमेंट नहीं करना है. एंड आईवी हार्टमैन सॉल्यूशन का कोई रोल नहीं है. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए. अनूप सिंह, सी नहीं है इसका आंसर. ये एसिम्प्टोमेटिक बच्चा है. एसिम्प्टोमेटिक में कभी ग्लूकोज नहीं देते, याद कर लो. एसिम्प्टोमेटिक नेवर बोलस, सिम्प्टोमेटिक ऑलवेज बोलस. ऑलवेज बोलस. ऐसे ही याद करते हैं, ऐसे ही याद करना है, अब याद रहेगा. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. 2 week old neonate has high direct bilirubin, clay, सब कुछ लोगों ने कहा ग्रे कलर्ड स्टूल था, डार्क कलर्ड यूरिन, एलिवेशन इन AST ALT. व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस? डायरेक्ट बिलिरुबिन मींस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनेमिया, डार्क कलर्ड यूरिन, क्ले कलर्ड स्टूल, 2 हफ्ते से ज्यादा न्यूबॉर्न चल रहा है, जॉन्डिस. तो दिस इज बिलियरी एट्रीशिया. बिलियरी एट्रीशिया. क्रिगलन-नाजा सिंड्रोम, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, गिलबर्ट सिंड्रोम, तीनों में अनकॉन्जुगेटेड जॉन्डिस होता है और इनमें नॉर्मल स्टूल कलर होता है.
And physiological is anyways ruled out because this child is having jaundice even at 2 weeks. Jaundice, physiological jaundice will not continue till 2 weeks. It will slowly start uh, getting treated without any therapy. Question number 11. ये तो सही हुआ होगा. Child is brought for developmental assessment to a pediatric clinic. He is having mongoloid facies with prominent epicanthal folds. Uh, Mongoloid facies, prominent epicanthal float, flat face with upslanting palpebral fissure, right? Hypotonia, single transverse palmar crease. ये क्या है? Simian crease की बात हो रही है. He also has intellectual disability. ये तो बहुत आसान आंसर है. What is the answer to this question? ये तो सही होना चाहिए. Down syndrome, right? Down syndrome था. तो Down syndrome आता है. आगे चलते हैं. Question number 12. Adolescent boy. एज नहीं मुझे मिला. अलग अलग लोगों ने अलग अलग एज बताया. तो does not matter. Look at the options. Tremors है. Difficulty in speech है. मीन्स देर इज सीएनएस इन्वॉल्वमेंट. रेज्ड बिलीरुबिन है, हेपेटोमेगली है, यानी कि लिवर इन्वॉल्वमेंट. एंड गोल्डन ब्राउन केएफ रिंग है एट द लिम्बस ऑफ कॉर्निया. सो केएफ रिंग मीन्स आई इन्वॉल्वमेंट. सो व्हाट इज द डायग्नोसिस? पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम विल्सन डिजीज. और विल्सन डिजीज में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है. बच्चे के अंदर सीरम सेरुलोप्लाज्मिन, एडल्ट में 24 आवर यूरिन कॉपर एक्सक्रीशन. सीरम सेरुलोप्लाज्मिन गेट्स डिक्रीज्ड, 24 आवर यूरिन कॉपर एक्सक्रीशन गेट्स इंक्रीज्ड. बट व्हाट इज द best investigation or gold standard? It is always liver hepatic copper estimation or biopsy. That is the answer. In fact, mutation analysis की जरूरत ही नहीं है. If you find more than 200 microgram of copper per gram hepatic tissue, that is virtually diagnostic of Wilson disease. Wilson disease हमेशा आता है, and this was also a easy question. And don't panic, because if you look back all of these questions, you would find कि जो easy question है, you have already marked them correct. It is just that you are not registering them properly. It is the difficult or the things you thought more and marked wrong which stay in your mind for a long time. So don't worry, you have very good fighting chance. सब सही नहीं करना है, 300 में से 150 करना है. कुछ तुक्के भी तो सही हुए होंगे. You understand? So don't worry. Question number 13. Exclusively breastfed baby presented with lethargy, vomiting, hepatomegaly, and cataract. Which enzyme deficiency can produce a clinical picture like this? गैलपुट वर्ड नहीं यूज किया था, पुराने एग्जाम में गैलपुट था, इस बार उन्होंने गैल्ट बोला था. गैलेक्टोज 1 phosphate uridyl transferase. So this is a child who's having features of classic galactosemia, and classic galactosemia is commonly caused by galactose 1 phosphate uridyl transferase. बायोकेमिस्ट्री में भी आता है, पीडियाट्रिक्स में भी आता है. जो मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में पढ़ाता हूं, मैं उसे पीडियाट्रिक्स मान के चलूंगा. सो दैट इज व्हाई आई एम क्लेमिंग इट, बिकॉज दिस इज समथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन माय YouTube sessions also with all of you, right? So galactose 1 phosphate uridyl transferase, GALT enzyme is your answer. तो ये easy था और repeat था. This was a repeat PYQ of FMG. सब नीट पीजी के PYQ नहीं है, ये FMG का PYQ है. Moving further, question number 14. डॉक्टर नदीम, एज आई सेड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, अगर आपको लगता है कि ये नहीं है इनमें से कोई क्वेश्चन, तो यू कैन रूल देम आउट. बट आई हैव गॉन थ्रू, मेड दिस फाइल सर्कुलेट अमंग द स्टूडेंट्स, एंड देन फिर डॉक्टर ट्यूटोरियल ने अपना एक फाइल मुझे भेजा. वो क्रॉस चेक करने के बाद ही आई एम टेकिंग दिस सेशन. बट इफ यू स्टिल फील कि ये क्वेश्चन नहीं था, तो यू कैन ऑलवेज रूल देम आउट, राइट? बिकॉज आई हैव नॉट गिवन द एग्जाम. I am only dependent upon whatever you people are saying. So question number 14. A child is in the habit of eating flakes of ball pen repeatedly as a बिहेवियरल डिसऑर्डर. एक और चीज, जो क्वेश्चन आसान होता है, पीवाईक्यू होता है और देखते ही मार्क कर देते हो, वो दिमाग में टिकता नहीं है. दैट योर ब्रेन डजंट रजिस्टर. ओनली द टॉपिक यू स्पेंड फुल 5 minutes and then mark it wrong is the one your brain registers. So keep that. I've been a student, so I know, and I've given enough exams to know that. So एक बच्चा है, वॉल पेंट खाता है, he is at risk of developing what? इस बच्चे को डिसऑर्डर क्या है? He is suffering from a disorder known as pica. Very very common problem. मिट्टी खाना, पेंट खाना, चौक के पीस खाना. This is pica. Pica children, because they eat paint, solvent is lead based, so these children have a tendency to develop lead poisoning in the paper. वॉन गिरकिस डिजीज के क्वेश्चंस थे, बट वो रिकॉल नहीं हो पाए हैं. एक स्टूडेंट ने बोला कि सर हेपेटोमेगली जैसा कुछ था अलोंग विद वो, बट आई वाज नॉट एबल टू रिकॉल. वो मैंने एंड में समराइज किया है, राइट? सो एज आई एम सेइंग, just to make my list long, I will not claim a question as well unless it has been recalled by the students. So question number 14, answer is B. ये question, पाइका पे question has not been asked in FMG exam directly, but it is a NEET PG question जो कि FMG में indirectly पूछा गया है. इसका एक जल्दी से क्विक रिव्यू देख लो. persistent ingestion of non-edible non-nutritive substances for at least 1 month, उसे कहते हैं पाइका. क्या चीजें खाता बच्चा?
उसका मन करता है खाने का। मड, पेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चॉक्स, पेपर बिट्स। एक स्टूडेंट ने मुझे बोला सर मैं भी चौक खाता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। वो तुम्हारी गंदी आदत है, तुम्हें पाइका नहीं है, पाइका बच्चे में होता है, right? So age is 6 months to 5 years. You are definitely not 5 years of age. Risk factors are iron deficiency, autism, low IQ, that is intellectual disability, and psychosocial stressor. कॉम्प्लिकेशन देखो, और ये कॉम्प्लिकेशन पे क्वेश्चन आता है, मैंने लाल से लिखा हुआ है वहां भी, लेड पॉइजनिंग एंड वॉर्म इन्फेस्टेशन। मिट्टी खाएगा तो वॉर्म के वो एग्स आ जाएंगे into the gut and that will cause hookworm and pinworm infestation. एस्कैरिस भी हो सकता है। एंड पेंट खाएगा तो लेड पॉइजनिंग हो जाएगा। ट्रीटमेंट इज बिहेवियरल थेरेपी। लो डोज आयरन सप्लीमेंटेशन हैज बीन फाउंड टू बी यूजफुल, बट पर से द आयरन stores are found to be normal. The ferritin levels and everything are generally normal, but iron supplementation has been found to be useful in a few patients. Right? Let's go further. आगे चलते हैं। 9 month, अब ये आ गया डेवलपमेंट माइलस्टोन का। 9 month old child is able to smile at people and is able to transfer objects hand to hand. Which other milestone will be expected to be present at this age? अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ये क्वेश्चन सॉल्व होगा by using the existing options to rule out and reach the correct answer. It was a tough question. I would say this was the toughest question in pediatrics. But if you remember the tables of milestone precisely that I discuss in my classes, I've discussed in my revision classes also, T&D also, you should be able to mark it. एक एक करके चलते हैं। Creeping कब आता है? Creeping well comes at, you tell me, 10 months of age. 9 पे नहीं आता है। दो चीजें होती हैं, crawling, creeping. Crawling होता है, crawling 10 months of age पे start होता है और इसका range होता है 10 to 12 months. Crawling में abdomen is touching the ground, creeping में it is lifted above the ground. Creeping well, ओपी गई कहता है 12 मंथ पे आता है, नेल्सन कहता है 10 मंथ पे शुरू होके 12 महीने पे आता है, यानी कि 9 मंथ पे नहीं होता है। 9 मंथ पे क्या होता है? क्रीपिंग होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रीपिंग क्रॉलिंग को सेम मानते हैं एंड दैट इज हाउ दे गेट द आंसर रॉन्ग। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। मैच्योर पिंसर ग्रास्प 12 मंथ्स ऑफ एज, दैट इज नॉट द आंसर। रनिंग स्टडीली, देखो चलना ही 12 महीने पे आता है, तो रनिंग स्टडीली तो 15 टू 18 मंथ्स पे आएगा। सो दिस, ये तो 18 मंथ्स पे आएगा, दैट इज नॉट द आंसर। अब क्या बचा? रिस्पॉन्स टू नेम कॉलिंग। रिस्पॉन्स टू नेम कॉलिंग, आप नाम बोलो, बच्चा गर्दन घुमाता है और आपकी तरफ रेंगने की कोशिश करता है, क्रॉल करने की कोशिश करता है, दैट इज रिस्पॉन्डिंग टू नेम कॉलिंग। इट्स अ टफ माइलस्टोन दैट वी जनरली डू नॉट डिस्कस। I discuss this milestone in my super specialty lectures when I train students for super specialty. तो ये क्वेश्चन उस लेवल का है। तो क्या एग्जामिनर ने क्यों डाला? Because examiner does not want anyone to score 300 out of 300. At the same time, if you are smart and a bright student and remember milestones precisely, you can reel out the option and still reach the correct answer. Responding to name calling comes between 6 to 9 months of age. If not present by 9 months, you do a hearing test to see कि hearing normal है कि नहीं. If abnormal, तो राजीव धवन सर को रेफर करना है। ENT कंसल्टेशन नीड्स टू बी टेकन। वो करेंगे आगे बेरा, वो जो भी टेस्ट कर रहे हैं उन्होंने, और आगे जो इम्प्लांट लगाना है या जो भी हियरिंग एड देना है वो उनका काम है। अगर हियरिंग टेस्ट इज नॉर्मल तो यू विल इवेलुएट फॉर ऑटिज्म। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए इवेलुएट करोगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। और ऑटिज्म के जो फीचर्स होते हैं उसमें चेकलिस्ट के अंदर देर आर ओनली 3 or 4 पॉइंट्स, दिस माइलस्टोन इज अ पार्ट ऑफ दैट। प्रोबेबली द पर्सन हु फ्रेम्ड दिस क्वेश्चन is a autism expert, he or she, we don't know, and they put up this question. Unfair, but again, tough question and a beautiful question. So, ये है जो question जिसका सही हुआ है और सोच के सही हुआ है, तो you deserve to get, a very good score in the exam. It's a tough question. It was a tough question, right? So it's okay. Object permanence अगर ऑप्शन में था तो देखो, ऑब्जेक्ट परमानेंस शुड बी कमिंग इट। अगर आप अमेरिकन स्टूडेंट्स को देखें, अमेरिकन चिल्ड्रन को देखें, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस begins at about 9 months, but if you look at OP गई 10th edition, it comes at 10 months of age. और इनफैक्ट मैंने अपने recent update के अंदर भी ऑब्जेक्ट परमानेंस को 10 months लिखवाया आपको, and so that is your correct answer. So that does not change the name, and the answer to this question is D. If you got it right, it's a bonus. If you did not get it right, an answer, as I said, will depend upon the options given.
ओके, लेट्स गो फर्दर। क्वेश्चन नंबर 16, ये अब आया शॉर्ट स्टेचर का क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन मैरस्मस नहीं था एंड पेपर बिकेम टफ। So, 12-year-old child is being evaluated for short stature. His skeletal or bone age using hand X-ray is found to be 10 year. तो chronological age कितना है? Chronological age, it is 12 year. Bone age is 10 year. No dysmorphism, child is otherwise healthy. अब देखो chronological age is exceeding the bone age. टेस्टिकुलर साइज स्मॉल, लोगों ने कहा कि सर टेस्टिकुलर साइज मेंशन किया था। टेस्टिकुलर साइज स्मॉल का मतलब है puberty has not yet started. That indicates again delayed puberty. So delayed puberty will mean the penis and testis size is small because increase in testicular volume is the first sign of onset of puberty. So delayed puberty in a boy, chronological age more than bone age. What is the answer? Constitutional delay in growth is your answer. That is your answer. So if you marked D as the answer, it is correct. It is इसका एक और वर्शन है जिसमें स्टूडेंट्स ने बोला कि सर रेशियो अलग था, हैंड एबनॉर्मल था। देखो अगर हैंड एबनॉर्मल वाला वो सब चीज होगा देन इट विल बी achondroplasia, बट दिस इज द more likely question which was there and this is what most of the students agreed कि सर ये वाला version था, right? So answer to question number 16 is D, that is constitutional delay in growth. Let us move further. Question number 17. अब आप बोलोगे सर ये गायनी है, अभी गायनी लग रहा है गायनी है, बट गायनी में वैसे बहुत कुछ है पढ़ने को और ये मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूँ, सो आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 17, 12-year-old गर्ल इज बीइंग इवैल्यूएटेड फॉर प्यूबर्टल डेवलपमेंट। उसके अंदर देखो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हैज स्टार्टेड, सो थिलार्के हैज हैपेंड, प्यूबिक हेयर हैज अपीयर्ड, सो प्यूबार्के हैज कम, टैनर स्टेज 2 पे पहुंच गई है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट लाइकली इवेंट? इसके बाद आना चाहिए तो मीनार के, लेकिन मीनार के और थिलारके के बीच में आता है पीक ग्रोथ स्पर्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज पीक हाइट स्पर्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज पीक हाइट वेलोसिटी। और अगर ये ऑप्शन में था, जो कि था, दैट इज योर आंसर। मेंसेस या मीनार के उसके बाद आएगा। एंड एक्सिलरी हेयर इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ टैनर स्टेजिंग। You understand? Axillary hair development occurs in puberty, but it is not useful to define the stage of puberty. Tanner stage में girls में दो feature होते हैं, breast and pubic, and boys में तीन होते हैं, testis, penis and pubic hair. When we talk about the sequence, तो puberty के दो component होते हैं, appearance of secondary sexual character and ability to reproduce. तो इसमें हम तीनों को consider करते हैं, थिलार के, प्यूबार के, मिनार के, और उसके बीच में आता है पीक ग्रोथ स्पर्ट। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, पीक हाइट वेलोसिटी। आमिर सोहेल कह रहा है पीक प्यूबिक हेयर वाज नॉट इन द क्वेश्चन। अगर प्यूबिक हेयर नहीं भी था, उन्होंने अगर टैनर स्टेज 2 लिख दिया, तो टैनर स्टेज 2 में क्या होता है? एसएमआर स्टेज 2 में प्यूबिक हेयर अपीयर होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो चुकी है, राइट? तो प्यूबिक हेयर अगर क्वेश्चन में नहीं था, ऑप्शन में था, तो आंसर प्यूबिक हेयर होगा। एज आई सेड, it depends upon how question was framed. So you are the best judge. I am just giving the information. You apply it and get your correct answer. Axillary hair answer नहीं है, ये तो पक्का है। आगे चलते हैं। Vaginal fluid, Mayank Bhandari, clear vaginal fluid can appear in stage 4, but उसे leukorrhea कहते हैं, and sorry, that is called as physiological leukorrhea. Physiological leukorrhea again does not occur in every girl. It is not a consistent sign and it is not a part of Tanner staging system. अगर word Tanner लिखा था क्वेश्चन में, ये आपको चेक करना है, तो आंसर vaginal fluid या axillary hair नहीं होगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन रिकॉल नहीं हुए। मेल चाइल्ड विद रिकरेंट नी स्वेलिंग, एक ने बोला सिग्निफिकेंट नी स्वेलिंग आफ्टर ट्रॉमा, आफ्टर फॉलिंग डाउन, नॉर्मल पीटी, एलिवेटेड एपीटीटी। सो मेल चाइल्ड, एलिवेटेड एपीटीटी, वी आर लुकिंग एट कोएगुलेशन, कॉज ऑफ ब्लीडिंग, मोस्ट लाइकली फैक्टर हीमोफिलिया ए और बी। क्या ये ऑप्शन में था फैक्टर 8 or factor 9 deficiency? If it was there, I could not recall the exact option, so I decided कि मैं खुद नहीं बनाऊंगा. I will leave it to you. But if this was mentioned, it is a previous year question of FMG. You should have been able to get it right. इसको मेडिसिन वाले भी अपना बोलेंगे, मैं भी अपना बोलूंगा, पैथोलॉजी वाले भी अपना बोलेंगे, है ना? But all it matters is whether you got the answer correct or not, right? Von Willebrand disease ऐसे प्रेजेंट नहीं करता है, हीमोफिलिया, हीमोफिलिया इज योर आंसर, राइट? हीमोफिलिया था ना, तो हीमोफिलिया इज योर आंसर। व्हेन वी से हीमोफिलिया,
it is hemophilia A which is being talked about unless mentioned otherwise. Remember this. Hemophilia A is also sometimes called as hemophilia simply. तो मेडिकल लिटरेचर है। आगे चलते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉल है, मैंने सिर्फ आंसर बता रहा हूं, ये आपको देखना है कि क्या था। फीचर्स ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेंशन किए गए थे, राइट, टॉल था एंड अदर फीचर्स वर देयर। मार्फन नहीं है, मार्फन अलग है, मेडिसिन रिकॉल नहीं कर रहा हूं मैं। सो मार्फन के दो क्वेश्चन थे, वो अलग है, वो मेडिसिन में रिकॉल होगा। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, आई डोंट रीच मार्फन, सो आई विल नॉट क्लेम दैट एज माइन। सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का फीचर्स थे, और उसमें अनडिसेंडेड टेस्टिस भी था, स्मॉल गोनेड्स भी थे, ऐसा क्वेश्चन था, और जीनोटाइप पूछा था। द आंसर वाज 47XXY एंड दैट इज योर आंसर। क्या ये क्वेश्चन था? आई एम क्वाइट श्योर ये था, but I could not remember it what the exact was. क्वेश्चन नंबर 20, पैथोलॉजी पीडियाट्रिक्स का ओवरलैप। क्वेश्चन मुझे बहुत रिसेंटली मिला, अभी आधा घंटा पहले मिला, कि एक बच्चा है, इजी फेटिगेबिलिटी है, इरिटेबिलिटी है, पैलर है, एंड ही हैज फोटो दिया था hypochromic microcytic RBCs का peripheral blood film पे, and they had asked the likely diagnosis. The answer is iron deficiency anemia. This is something which I have discussed in my recent hematology lecture I uploaded on YouTube. तो इसके ऊपर मैंने डिस्कस किया है, इमेज के साथ डिस्कस किया है. So it was a kind of repeat, but it can be medicine, it can be pediatrics, it can be pathology question, right? तो मैटर नहीं करता, जैसे आई एम सेइंग, तो मैं देखो बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ कि ये ओवरलैप क्वेश्चंस है, तो ये किसी भी सब्जेक्ट में जा सकते हैं. व्हाट मैटर्स इज whether you got them right or not. And causes of neonatal meningitis पूछा था, ऑप्शन रिकॉल नहीं हुए, so I cannot comment upon that. बट ये आगे के लिए इंपॉर्टेंट है कि पढ़ के जाना, वर्ल्ड में अलग होता है, इंडिया में अलग होता है, इसमें आपके ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, इकोलाई, क्लेप्सियला, सिनेटोबैक्टर ये आएंगे, तो द आंसर विल डिपेंड अपॉन व्हाट ऑप्शंस आर गिवन टू यू, और ये माइक्रोबायोलॉजी नहीं है. कॉजेज ऑफ नियोनेटल निमोनिया, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस, ये पीडियाट्रिक्स होता है, ये माइक्रोबायोलॉजी नहीं होता. माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ते हो, लेकिन वो आंसर गलत हो जाते हैं, बिकॉज दोज आर नॉट द वंस व्हिच आर मेंशन्ड इन ओपी गई और इन एम्स प्रोटोकॉल. सो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के अंदर एम्स प्रोटोकॉल फाइनल वर्ड है, उसमें कुछ लिखा गया, बाकी कहानी खत्म हो गई, राइट. आगे चलते हैं. पीएसएम का क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूं, लेकिन पीडियाट्रिक्स से ओवरलैप करता है, वैक्सीन से रिलेटेड है, तो मैं क्लेम नहीं करूंगा मेरा है, बट बिकॉज वी आर डूइंग रिकॉल, तो आई एम जस्ट मेंशनिंग इट हियर सो दैट यू कैन बी रीअश्योर्ड कि इतना खराब भी पेपर नहीं गया. 9 month old child has no BCG scar, although there is documented evidence of baby having received BCG at birth. What is the next step? Reassurance of the mother. 10 से 15% बेबीज के अंदर BCG has no scar, but protective efficacy is attained. तो रिपीट नहीं करना है. Reassurance of the mother is the only thing that you need to do. आगे चलते हैं. आपके जो डाउट्स हैं वो मैं अलग से टेकअप करूंगा, राइट, अलग से टेकअप करूंगा, सो जस्ट वेट अ मिनट. Next is question number 23, last question hai from the recall. According to the open vial policy, which of the following vaccines can be reused and which should be discarded? Measles, MR, MMR, these are live vaccines, they should be discarded, and you can reuse pentavalent, which is a part of the open vial policy. So B is your correct answer, right? Open vial policy आपने पढ़ा है. मेरे डिटेल लेक्चर्स जो FMG के हैं ऑन डॉक ट्यूटोरियल, आई हैव डिस्कस्ड ओपन वाइल पॉलिसी, वैक्सीन इंक्लूडेड, वैक्सीन एक्सक्लूडेड. So I'm taking it in pediatrics, but if you have attended offline classes, this is something which I do not discuss in offline. It is discussed in the PSM part of offline, but you can see what you marked in the options, and that was the correct answer. So out of these 23, if you see, milestone was tough, Tanner staging was tough, another couple of 1 or 2 questions were tough, but do you understand 16 to 17 questions at least were solvable, doable, and you must have got them right. So pediatrics continues to be the scoring area for your FMG exam. तो बच्चे को प्यार दो. कभी ऑफ था बहुत आएगा, इस बार बहुत आया, कभी ऑफ था 5-6 पे भी चला जाता है. पीडियाट्रिक्स कंसिस्टेंट रहता है, राइट. पीडियाट्रिक्स इज लाइक दैट डिपेंडेबल बैट्समैन who will always be there. These days test matches में, like KL Rahul, he's consistently performing. So similarly you have pediatrics, right? So thank you so much for your time. You are most welcome to put up more updates. इसी का एक detailed version and a green screen version I will be putting up after the complete recall is there. But this was just because many of you requested me कि sir एक अच्छा quality का डाल दो. So this was the best I could come up with. A recall is only as good as the
quality of questions sent by the student. If the answer or option changes, the answer will also change. But except for 2 or 3 questions, I think most of these questions, the recall which I have done, they are as closed as possible as I could get. Right? सीवियर निमोनिया नदीम हो चुका है. इस सेशन को दोबारा सुन लेना जैसे ही खत्म होगा. उसके बाद मैन 2 का कोई रोल नहीं है इन डिसाइडिंग बीसीजी. अब बाकी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, आपके पास सबके पास यही 30 से 40 क्वेश्चन है, वही सब घूम के बता रहे हैं. बाकी के 200 क्वेश्चन का कोई रिकॉल नहीं है. खान जी वेट करो, मैं तो अपने सब्जेक्ट के बताऊंगा, है ना. गायनी मुझे नहीं आती, ऑप्था मुझे नहीं आती, तो वो उनके टीचर्स बताएंगे. जब उनका रिकॉल आएगा आप सुन लेना. मैंने पीडियाट्रिक का बता दिया. वन ऑप्शन, एक क्वेश्चन पॉन्स का लीजन था और ऑप्शंस वर एब्डक्शन ऑफ द आई, मायोसिस, मियोसिस, निस्टैगमस. भाई ऑप्था क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन दे दोगे तो शायद मैं आंसर बता पाऊं. बट अगेन दिस इज टू लिटिल इंफॉर्मेशन फॉर मी टू गिव द करेक्ट आंसर एंड इट्स नॉट माय सब्जेक्ट. हिस्ट्री 3 वीक नियोनेट फीवर नॉट टेकिंग फीडबैक. अगर किसी बच्चे में, आई एम मेंशनिंग इट हियर, अगर आपको, इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई आल्सो हैव माय टेलीग्राम ग्रुप एफएमजी एवेंजर्स नाम से. आई विल शेयर विद यू. एक चीज और इसमें समझ लो, आई एम जस्ट मेंशनिंग इट हियर. अगर 3 वीक चाइल्ड है who's presenting with new who's presenting with fever, respiratory distress, or seizures, you should think of sepsis as first possibility. It could be pneumonia, it could even be meningitis. So that will it will all come down to कि आपका ऑप्शन क्या दिया था और क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया गया था. Another thing, question 11, Gilbert was the option. Amir Sohail, even if Gilbert is there, that will not change the answer. Gilbert and Rotor syndrome, they are causes of conjugated jaundice, but they do not manifest in the newborn period. Gilbert syndrome is unconjugated, and Dubin-Johnson and Rotor are conjugated, but they do not manifest in newborn period. High jaundice, clay-colored stool is the clinching factor. Gilbert syndrome में clay-colored stool नहीं होगा. It is biliary atresia which is your answer. Biliary atresia ही है. Justify मत करो, गलत हो गया है, मान लो. It is difficult to sometimes acknowledge, but let's live with the reality. यार देखो ये गलत बात है. We all try our best to teach the best we can. I would humbly request, offending चीजें किसी के बारे में मत बोलें. That is my humble request to you, right? So I hope all of you benefited from it, and all the very best. Rohit, that recall I will take on my own channel later, not now, right? I will take it later. I will take it tomorrow. So thank you so much, and thank you for staying back. Let us hope all of you do well, and I'm praying for all of you. I'm wishing all the best to all of you. Thank you so much.